Good morning, my talented students. Today we will first understand the formula. Bill Gates formula we have given the name. Bill Gates, the great man, founder of Microsoft company. This great man went to Donald Trump, President of America, and asked him, I want to get married again to the same wife, but in Indian style, with Indian culture. Donald Trump rang up our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. Modi ji, the great man Bill Gates wants to get married in an Indian style in India. Modi said, no problem, sir, come. Arrangement was made, the day of the marriage was fixed, and early in the morning all preparations finalized. Top leaders of the world came to Nagpur to witness this historic marriage of the great Bill Gates. Bill Gates, as usual, now with Indian style, stood here. His wife stood to that side and अंतर पाठ एक कपड़ा बीच में डाल दिया गया और गुरुजी के मंत्र शुरू हो गए. शादी की तैयारी शुरू हुई. हर एक के हाथ में अक्षदा सैक्रेड राइस हर एक के हाथ में दिया गया और मंत्र शुरू हो गए गुरुजी के. ताड़ा टा डडडा डडा डडडा कुर्यात् सदा मंगलम शुभ मंगल सावधान एंड उनके ऊपर अक्षदा डाल दी गई. नाउ व्हाई द नेम बिल गेट फॉर्मूले? I tell you, this is Bill Gates, his wife, same wife. We are standing here with Akshada and with music after Mangala steps are over. Shubha Mangala Savadhan, that means you have to give tan inverse to x, tan inverse to y. Tan inverse to Bill Gates, tan inverse to Bill Gates' wife. Hence the name Bill Gates formula. Tan inverse of x plus tan inverse of y. So what is the formula? First, tan inverse of x plus y upon 1 minus xy is equal to tan inverse of x plus tan inverse of y. Second formula, tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is equal to tan inverse of x minus tan inverse of y. Now, ऊपर अगर प्लस है तो नीचे माइनस रहेगा, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस रहेगा, सेम साइन रहेगा नहीं बिल गेट फॉर्मूला में. फिर उसके बाद करना क्या आपको? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. Now these are called as Bill Gates formulae. So now we see examples on Bill Gates formulae. First example, find dy by dx if y is equal to tan inverse of 4x upon 1 plus 21x square. Now what you have to remember, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर में क्या आएगा? माइनस. वेरी गुड. नीचे प्लस है तो ऊपर में माइनस. नाउ दो टर्म ऐसे ही ढूंढो जिनका डिफरेंस 4x आएगा और प्रोडक्ट 21x स्क्वायर आएगा. तो दो टर्म कैसी रहेगी? 7x एंड 3x. 7x minus 3x is 4x and 7x into 3x is 7 3s are 21, x into x, x square. तो इसके जगह ये लिखा बिल्कुल करेक्ट है. Now this is Bill Gates and his wife. So according to Bill Gates formula, tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is equal to tan inverse of x minus tan inverse of y. This becomes tan inverse of 7x minus tan inverse of 3x. I repeat, tan inverse of 7x minus tan inverse of 3x. So this is a tan inverse of 7x minus tan inverse of 3x. Differentiate both sides with respect to x. So ddx of y is equal to ddx of tan inverse of 7x minus ddx of tan inverse of 3x. Again, the Gaussian concept will come into play. What is Gaussian concept? We have to consider the term in the bracket as u, Amir Khan. So what is root of tan inverse of u? 1 upon 1 plus u square. यानी 1 upon 1 plus 7x का whole square into
जिसको u पकड़ा उसका डेरिवेटिव ऑफ sin x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x? देखो क्या दिख रहा है आपको, tan इनवर्स ऑफ u। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ u? 1/1 plus u square into जिसको u पकड़ा उसका डेरिवेटिव, यानी 1/1 plus 3x का होल स्क्वायर into ddx of 3x। now 1/1 plus 7 square 49x square into 7 constant ddx of x is 1, तो यहाँ बचा 7। 1/1 plus 9x square यहाँ हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 3x is 3 constant, डेरिवेटिव ऑफ x is 1। फाइनल आंसर 7/1 plus 49x square minus 3/1 plus 9x square is the answer. Just wait, I will tell you the CET and JEE trick hereafter. Once you write Bill Gates formula in this form, this step, no need to write. The direct answer is this 7/1 plus 7x का whole square, यानी 7/1 plus 49x square minus tan इनवर्स ऑफ 3x है, ऊपर क्या आएगा 3 अपॉन क्या आएगा 1 plus 3x का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 7x? 7/1 plus 49x square minus 3/1 plus 9x square. So after this step you can directly write this step in CET and JEE. That's all. Question is, find dy by dx if y is equal to tan inverse of 7x upon 1 minus 12x square। नीचे क्या है माइनस, तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा प्लस। whenever there is minus in the denominator you have to add two terms in the numerator, so which are the two terms whose product is 12x square and whose sum is 7x? now whose sum is 7x, the two terms should be naturally 4x and 3x, so I write tan inverse of 4x plus 3x upon 1 minus 4x into 3x। Using tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, our Bill Gates formula, so we get tan inverse of 4x plus tan inverse of 3x, tan inverse of 4x plus tan inverse of 3x, this step we get। Differentiate both sides with respect to x, that means हर एक टर्म को ddx लगाओ, ddx of y, ddx of tan inverse of 4x plus ddx of tan inverse of 3x। ddx of y is dy by dx। now comes the Ghazni concept, Amir Khan concept। I consider this as u, वहां से क्या दिख रहा है आपको tan inverse of u, very good। what is root of tan inverse of u? 1/1 plus u square, so 1/1 plus 4x का whole square into जिसको u पकड़ा उसका डेरिवेटिव ddx of 4x plus, now I want to find derivative of tan inverse of 3x। गजनी कौन है 3x, tan inverse of u आमिर खान दिख गया, tan inverse of u, what is the root of tan inverse of u? 1/1 plus u square, 3x का होल स्क्वायर इनटू जिसको u पकड़ा उसका डेरिवेटिव इज ddx of u, यानी ddx of 3x। so this is 1/1 plus 16x square, 4 is constant, ddx of x is 1। 1/1 plus 9x square, 3 is constant, ddx of x is 1। so final answer 4/1 plus 16x square plus 3/1 plus 9x square। वैसे भी CET में और JEE में इसके बाद no need to solve। what is the direct answer? 4/1 plus 16x square plus 3/1 plus 9x square, direct answer for JEE। example, find dy by dx if y is equal to cot inverse of b sin x minus a cos x upon a sin x plus b cos x। now remember, many times, maximum times, instead of cot inverse you have to write tan inverse। now we all know cot inverse of 1 by x is a tan inverse of x। I repeat, cot inverse of 1 by x is a tan inverse of x। so what we will do, instead of cot inverse write tan inverse and this write in a reciprocal form। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर होगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, दैट मींस tan इनवर्स ऑफ a sin x ऊपर जाएगा, a sin x plus b cos x divided by b sin x minus a cos x। I think you get the step, instead of cot inverse write tan inverse
जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में लिखो और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में लिखो। वी गॉट दिस स्टेप। tan इनवर्स ऑफ ये ऊपर गया और ये नीचे आया। नाउ ऐसे सिचुएशन में वी नॉर्मली डिवाइड, यहाँ पे 1 लाते हैं हम लोग, क्या लाते हैं 1, दैट मींस डिवाइड nr एंड dr बाय b sin x। सो tan इनवर्स ऑफ न्यूमरेटर के हर एक टर्म को और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को b sin x से डिवाइड करेंगे। a sin x अपॉन b sin x प्लस b cos x अपॉन b sin x, b sin x अपॉन b sin x माइनस a cos x अपॉन b sin x। sin गॉट कैंसल, a अपॉन b बचा, b कैंसल, cos x अपॉन sin x यानी cot x बचा, ये टोटली कैंसिल होकर 1 बचा, यहाँ बचा a अपॉन b और ये बचा cos x अपॉन sin x। और इस cos x अपॉन sin x cot x। सो क्या बचा tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस cot x अपॉन 1 माइनस a अपॉन b इनटू cot x। फिट केस फॉर बिलगेट फार्मूला। ये बिलगेट है, ये उसकी वाइफ है, इंडियन स्टाइल। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान, टंगड़ंग एंड टंगड़ंग। tan inverse of a by b plus tan inverse of cot x by virtue of that formula, Bilgate formula. Tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, tan inverse of x plus tan inverse of y. So this becomes tan inverse of a by b plus tan inverse of cot x. Now tan inverse के बाद tan चाहिए, I don't want cot, so I will use pi by 2 to convert cot into tan. So then I write tan inverse of tan of pi by 2 minus x. Reason being, tan of pi by 2 minus theta is cot theta. So instead of cot x, I am writing tan of pi by 2 minus x. This tan inverse gets cancelled with tan and we are left with pi by 2 minus x and this term. Now differentiate both sides with respect to x. So ddx of y is equal to ddx of tan inverse of a by b plus ddx of pi by 2 minus ddx of x. This is constant, remember, a upon b is constant. So tan inverse of a upon b is constant and derivative of constant is 0, derivative of pi by 2 constant is 0, derivative of x is 1, so this is minus 1 and hence the answer is minus